Hi all, good morning. Welcome back to my channel Pari Cloud Knowledge. My name is Praveen Kumar. I am here to मैं आज आप लोग के सामने टेराफॉर्म का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। सो इस लेक्चर में हम लोग लैब करने वाले हैं। तो लैब किस पे होगा? लैब ऑन टू इंस्टॉल टेराफॉर्म एंड लॉन्च EC2 इंस्टेंस ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म। सो लैब को जाने से पहले हम लोग बात करते हैं कि टेराफॉर्म आखिर जो है टेराफॉर्म है AWS एज्योर और GCP क्लाउड जो है हम लोग का। तो ये जो ऑल क्लाउड है और टेराफॉर्म का जो कम्युनिकेशन होता है तो वो कैसे होता है? So the question is like how Terraform and AWS, Azure, GCP all are communicating between each other. So the answer is like with the help of API. So यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि API आखिर होता क्या है? So API simply means like application program interface. So application program interface क्या होता है? So let's discuss about application program interface. So API is the acronym for application programming interface, which is a software intermediary that allow two applications to talk to each other. So इसका मीनिंग हिंदी मतलब समझ सकते हैं। जो API जो है एक तरह से इंटरमीडिएटर होता है जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाता है। So you can see like API is the acronym for application programming interface, which is a software intermediary like mediator between one to another, so allow two applications to talk to each other. इसको अगर जो हम दूसरे भाषा में देखना चाहेंगे मतलब in another format, then you can see API simplifies software development and innovation by enabling applications to exchange data and functionality easily and securely. So इसका भी मतलब सेम है कि API क्या करता है, ये जो है डेटा को सेंड करता है विद द हेल्प ऑफ ये डेटा को सेंड करता है एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ API. ना हम लोग इस पे हम अगर जो एग्जांपल के थ्रू समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई ट्रिप हम लोग अभी कहीं ट्रिप के लिए जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं तो हम लोग ये टिकट्स बुक करते हैं थ्रू लाइक मेक माई ट्रिप. सो मेक माई ट्रिप एक वेबसाइट है जो जिसके थ्रू हम लोग ट्रिप पे जाते हैं और टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं. तो उसमें होता एक्चुअली क्या है, जो मेक माई ट्रिप जो है एक वेबसाइट है और मान लीजिए हम लोग का जो फ्लाइट है, फ्लाइट लेते हैं गो एयर इंडिया या लाइक इंडिगो एनी ऑफ देम. सो लाइक मेक माई ट्रिप एंड एयर इंडिया के बीच एक ऐसा बाउंडेशन बना हुआ है कि हम लोग जो भी मेक माई ट्रिप के थ्रू जो भी हम टिकट से करवाएंगे वो पेमेंट करेगा एयर इंडिया को या फिर लाइक जो भी और फ्लाइट बोल सकते हैं, एयर इंडिया, गो एयर, any of them, like so they are communicating each other with the help of API only. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जैसे हम लोग देखते हैं कि एक IRCT का वेबसाइट है, कोई टिकट्स इंडियन रेलवे से हम टिकट ऑनलाइन बुकिंग करते हैं. उसमें होता क्या है, हम लोग पेमेंट बुक करते हैं टिकट IRCT के वेबसाइट से, लेकिन पेमेंट किसके थ्रू करते हैं, या तो नेट बैंकिंग के थ्रू या तो फिर हम लोग पेटीएम के थ्रू करते हैं या तो गूगल पे के थ्रू. सो ये आखिर जो है और जो हम लोग का नेटवर्किंग रिसोर्सेज लाइक पेमेंट करने के लिए और जो IRCT का है, तो ये दोनों का कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो ये भी कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ API. अब आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वे. ना हम लोग मूव करते हैं लैब पार्ट में. तो लैब पार्ट में जाने से पहले आपको एक चीज होना चाहिए, या तो आपके पास वर्चुअल मशीन होना चाहिए या फिर AWS अकाउंट होना चाहिए जिसपे आप
VM इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक इंस्टेंस बना के उसको अपना एक टेराफॉर्म सर्वर बना सकते हैं, या फिर आप हार्डवेयर डिवाइसेस में भी कर सकते हैं, लाइक या फिर अगर जो आपके पास वर्चुअल मशीन है तो वर्चुअल मशीन में भी आप वहाँ पे लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके आप उसको भी सर्वर बना सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग उसके थ्रू नहीं जाकर हम सीधे से जाते हैं AWS पे एक अपना VM लॉन्च करेंगे और उसी को हम एक टेराफॉर्म सर्वर मान के चलेंगे और उसी को हम टेराफॉर्म सर्वर बनाएंगे। तो अब वो बनाते कैसे हैं और टेराफॉर्म उसमें लॉन्च कैसे करते हैं, मतलब डाउनलोड कैसे करते हैं उस सर्वर में, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप फर्स्ट में देखते हैं, टू चेक टेराफॉर्म इज इंस्टॉल और नॉट। आप सर्वर में लॉगिन करेंगे तो आप अगर जो देखना चाहते हैं कि टेराफॉर्म इंस्टॉल है या नहीं है, तो सिंपल सा कमांड है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म में टाइप करके हिट एंटर, देन इफ इट will show anything, then like Terraform is there, otherwise it will show like command is not found, then means Terraform is not installed. So स्टेप 2 में क्या है, टू इंस्टॉल Terraform। तो हम लोग Terraform इंस्टॉल करना चाहेंगे तो इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो सिंपल सा कमांड है wget एंड URL। तो wget कमांड है और उसका जो है URL है, तो URL आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको लैब में बताऊंगा। स्टेप 3 में जब वो डाउनलोड हो जाएगा तब स्टेप 3 में क्या है, वो डाउनलोड फाइल को उसको अनजिप कीजिए और वो अनजिप जो टेराफॉर्म का फाइल जो अनजिप हुआ है उसको /bin में डायरेक्टरी में कॉपी कर दीजिए। तो अनजिप करने के लिए अनजिप कमांड है और टेराफॉर्म सेटअप फाइल। नाउ कॉपी टेराफॉर्म फाइल टू /bin डायरेक्टरी। नाउ चेक द Terraform is installed or not, Terraform status, just type Terraform, hit enter. Now make a directory. So for making a directory, command for that like mkdir and directory name. So directory name हम दिए हैं परी cloud knowledge. Now enter into that directory which one we have created. So this is, I have created Pari cloud knowledge directory, so I'm going to this directory cd/। so next slide में क्या है, अब हम लोग उसी परी क्लाउड नॉलेज के डायरेक्टरी में जाकर एक हम अपना फाइल बनाते हैं। फाइल कोई भी फाइल नेम कुछ भी हो, लेकिन एक्सटेंशन .tf मैंडेटरी है। विदाउट tf इट्स नॉट वर्किंग। लाइक अगर जो आप लोग टेस्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो .txt मैंडेटरी है, उसी तरह से अगर जो आप टेराफॉर्म का फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो .tf इज मैंडेटरी फॉर दैट। तो फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दो कमांड है, एक vi से भी कर सकते हैं या vim से भी कर सकते हैं, vim। so any or you can use। now this is the format, like provider AWS region, it's all like syntax, you can say syntax like provider AWS region name access underscore key। so here it will ask my access key, here is the secret key, so you have to give secret key। this is the first syntax, this is the resource syntax कि आप लोग क्या क्या देना चाहते हैं रिसोर्स में, मतलब AMI ID क्या देना चाहते हैं, इंस्टेंस किस टाइप का होना चाहिए, आपका टैग क्या होना चाहिए, इंस्टेंस सर्वर नेम क्या होना चाहिए, ये सब रिसोर्स नेम में डिफाइन होगा। तो ये सब कहाँ से मिलेगा मैं आपको वेबसाइट पे जाकर ही बताऊंगा। सो नाउ क्लिक ऑन, इसको टाइप करने के बाद जस्ट यहाँ से ये फाइल को सेव कीजिए और यहाँ से एग्जिस्ट हो जाइए। नाउ अब स्टेप 4 में क्या है, अब ये फाइल को सेव करने एग्जिस्ट होने के बाद आप टास्क को इनिशियलाइज कीजिए। सो टास्क इनिशियलाइजेशन के लिए क्या कमांड है, टेराफॉर्म init। टास्क इनिशियलाइजेशन मतलब कोई भी चीज को हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए फर्स्ट पहले
इन टेराफॉर्म के फॉर्मेट में कोई भी टास्क स्टार्ट करने के लिए हमें init कमांड, ये init कमांड है। सो टेराफॉर्म init फॉर इनिशिएटिंग द टास्क। नाउ अब जो है टू ड्राई एंड रन द कमांड, तो टेराफॉर्म प्लान को हम लोग कहते हैं ड्राई रन कमांड। तो ड्राई रन मतलब अगर जो हम कोई भी टास्क को इनिशियलाइज कर लिए तो उसको नेक्स्ट लेवल में एग्जीक्यूट करना होता है, तो एग्जीक्यूट किए, तो एग्जीक्यूट इज नथिंग बट प्लान। तो स्टेप 6 में क्या है, अब वीएम को लॉन्च करना है या प्रोविजनिंग करनी है, तो उसके लिए अप्लाई होता है, मतलब फाइनल जो होता है, तो फाइनल में अप्लाई। और इसके बाद अगर जो आप चाहते हैं कि वो इंस्टेंस जो क्रिएट किया है आपने, तो उसे आप टर्मिनेट करना चाहते हैं या फिर डिकमीशन या टर्मिनेट सेम वर्ड से, सो आप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो सिंपल कमांड है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड share and comment on my video. If you have any doubts, please let me know on my WhatsApp number. I'll paste you on the comments. Now हम लोग सर्वर पे चलते हैं। So सर्वर पे कैसे कैसे क्या करना है। So this is my AWS account. So I'm going to launch one instance. So I click here, launch instance, select this one, Amazon Linux 2, select this one. I'm selecting this one, T2 Micro free tier. Now click on next, leave all by default, click on next. Volume should be default, like you can leave it default, no need to change anything, just change the tag name and value. Tag name I'm making as a like leave it, we'll see later. Just configure it. Now add one port, like all traffic. Instead of custom, select anywhere. Now click on review and launch. Select key pair. I have like my Linux key, I have that key pair. Select acknowledge this, launch instance. Now view instance. Actually I haven't given because this is their Terraform server is there. I have created Terraform servers, that's why I haven't given. हमारे पास एक सर्वर इनिशियलाइज हो रहा है, अब इसको हम लोग ये करते हैं, टेराफॉर्म सर्वर बनाते हैं, अभी टेराफॉर्म नाम देते हैं। नाउ सेव, ये इनिशियलाइज हो रहा है, इसको हम तब तक इसका ये पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं। नाउ पुट्टी ओपन करते हैं। नाउ यहाँ पे पेस्ट कीजिए। नाउ यहाँ पे सिर्फ अभी एसएस पे जाने से पहले अपीयरेंस में जाकर हम फॉन्ट चेंज करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। नाउ गो टू SSH, go to auth, select public key, sorry, my Linux private key. Yes, login user EC2 user. I logged in. Now sudo su. Now check like Terraform is installed or not. So command for that, TRRAFORM. So it's showing Terraform command not found. So first what we need to do, we need to install Terraform. So for that, to install the Terraform, for the
wget command is there, wget and the URL. So where you have got the URL, where you will find, select just here, search Terraform download. Now go to Terraform download. Here you can see Linux. So this one is 64-bit. Why we are selecting 64-bit? So just see here, I'll show you. By I have launched this one instance, Linux, Amazon Linux 2. So I'm selecting this one AMI. So this one AMI like 84 bit only is there. So that's why I'm selecting this one. So just right click and click on copy link address. Now go to putty and just shift insert. Now hit enter. Like Terraform is installed. How we can check like Terraform is installed? Just mark Terraform. You can say Terraform is installed. First unzip the file. Unzip Terraform. Now ls. Now click on Terra. Now copy this file. Copy this file, Terraform file, to /bin directory. ls pwd to check present working directory. Now check Terraform, hit enter. Then you will get here main command, init command, validate command, plant command, apply command, destroy command. So init command is prepare your working directory for other commands. So validate command, check whether the configuration is valid or not. Plan, show changes required by the current configuration. So you can see plan command, which why it's used for, show changes required by current configuration. And you can see apply. So create or update infrastructure. Apply command is used for create or update infrastructure. So destroy command you can see. So destroy command, which is what is for, destroy previously created infrastructure. So I'll tell you one by one. All other commands is there: console, fmt, force, unlock, get, graph, import. I'll tell you one by one. This is all are the commands which we are going to learn one by one. So now make a directory. Make directory pari underscore cloud underscore knowledge. Now ls pari cloud knowledge there, just cd pari cloud knowledge. I came into pari cloud knowledge directory. Now ls nothing is there. Now create a folder. Create a file vim. I'm creating with aws.tf. So need to give here the resources. So how we get the resources and infrastructure, you can see here. Now go to provider use. Now go to historical doc. Now go to provider. Then you will see provider for this is the syntax. A provider configuration look like the following. So provider, this is the syntax. So this is the syntax. So this is the default one. You cannot change. Access key is the default one. Secret key is the default one. Region is the default one. But what we need to change?
the red color you can see here, we have to type here access key, and we have to give secret key here, and we have to type region, like uh, here. If you click here, sorry, if you click here, then you can see global region. If you click, you can see here, like I'm in Mumbai region, so F South 1. So we need to give for that F South 1 instead of US East 1. So I'm copying this I have copied these things here. As of now, I'll show you. I have copied all the things here: AWS region name, my access key, secret key. So resource, I'll show you the resource. Mm, this is the uses. So I'll show you the providers. You can see providers. You can see this is the syntax. So I'll show you the syntax for resources, how we can add resources. So you can see here resources. Click on resources. Then you will get here example a resource configuration look like for. So in resources we have to type, this is the default one, you cannot change. So you can change here Bev. This is the AMI ID. We need to give AMI ID for that. And instance type we can give here on basis like T1 micro, T2 micro, T3 micro, T2 large, which whichever we want we can give here. So this is the syntax for resource. Now, so this is the syntax for tag. If you want to apply tag at a time, just this is the syntax for that. So I have mentioned all these things, just I'm copying from here. Control C, I'm going to server. Now I'm typing I came into insert mode. Now shift insert. So now it's inserted. So need to check the access key, secret key, and AMI ID is correct. And resource, this is the cloud knowledge. I'll show you how to check access ID and secret, sorry, access key and secret key. Go to AWS account. Now go to IAM. Now here you can see, yeah, if you don't know, just I'll show you. You are in like EC2. If you want to check the access key and sorry, access key and secret keys, just click on your name like account. Now click on my secret credentials, sorry, my security credentials. Now click on access key. You can see here access key ID and secret key ID. Just click on here. Now click on create new access key. So here you can see show access key. Click on here. Now copy access key. Control C. Now go to server and paste here. Sorry. Region I shift insert. That's done. Here is the region. So which region we are in? F hyphen SOUTH hyphen 1. Let me check F South 1 is there or not. Here, go to here, you can click on EC2. Now copy secret key, go to server, came below in secret key.
shift, insert, copy, paste. Now check which regions I am in. Mumbai, app, south, SOUTH -1. You can verify app south 1. So this is the resource, AWS instance. You can modify her like cloud knowledge. You can give your as your convenience name. I'm giving like Pari cloud knowledge, PARI. Pari cloud knowledge. Now need to check the AMI. So go to the AWS account. Now click on launch. Then you can see here AMI ID. So you can just copy and paste there. But I have already pasted this one. AMI 0F1. Here you can see 289. Sorry, 28D. You can verify AMI 0F1 28D means it's already pasted. So instance type, which one you wants to install? I'm going to launch as a T2 micro. So I have selected T2 micro because T2 micro is free of cost. So that's why we are going to install T2 micro only. So you can see number count. So if you don't give count, it will it will launch only one instance. If you give here count like 2, 3, 4, it will launch 3 instance, 2 instance, 2 instance. First I'm not giving any count. I'm removing the count. Now I'm let's save for saving. Just click on escape, click on shift colon and WQ and click on enter. Now you can outside. Now type Terraform I need to initialize the task. So it's showing initializing. You can see initializing the backend. So you can see Terraform has been successfully initialized. Now type Terraform plan. Terraform plan means we can we can see the configuration which one we have applied. Like you can see here, I'll show you the entire things. AMI name, ARN associate public IP. No, after apply, you can see root block devices. If you apply any all things like keep pair CIDR, then it will show here only. So this is the use for plan. Now apply Terraform, apply to launch the VM. Now it's asking for, do you want to perform this action? So enter a value, just mention yes, because we are going to install sorry, we are going to launch VM. So now after giving yes, it's showing AWS instance dot pari cloud knowledge creating. Just wait a few seconds, you will get clear picture. Now go to server. Go to server. Now click on EC2. Then you can see this one. Terraform server I have given. Terraform server. So you can see it's initializing. Just now it's initializing. Now apply complete. Resource 1 added. 0 change, 0 destroy. So it's like initializing. After sometimes you will see like 2x2 status. Just let me check.
Still it's initializing. Might be it will take 1 minute. But the instance is running a state, you can see here, because before that we have only one this instance, but it's still it's initializing. After it came like 2 by 2 status, it will came in like healthy 2 by 2 status only. Still initializing. Let me do one thing. I'm destroying this instance. I'll launch like 5 instances, 10 instances at a time. So I'm destroying this one, like Terraform destroy. Terraform destroy means when if you want to remove the like terminate the instance, we need to give Terraform. Now you can see it came into 2 by 2 status check. So I want to destroy the terminate this instance. Just Terraform destroy. Hit enter. Now enter a value, click on yes, type yes and hit enter. Now go to here. Now refresh once. Then you can see it's shutting down. After sometimes you will see like terminated. Within 1 minute you will get like terminated. It will show. You can see it's showing terminated. Now I'm going to launch like 5 or 10 servers at a time. Now open that one file, beam aws.tf. So instead of like here, just mention count. Count equals to how many you want to install at a time. I'm going to install at a time 10 instance. That's it. Now click on escape, shift colon WQ. Just a second, let me change one more thing also, like name also, tag name. I'm changing the tag name. I'm giving like free AWS Terraform. Yeah. Now escape, shift colon WQ, save. Now type Terraform. I need not required because it's already in slide, so not required to give every time I need. Just for next, if you have given one time, it's fine. No need to give every time. Now execute directly plan command. Terraform plan. Sorry. Then it will show the resources what you have applied. Now type Terraform apply. Value to give yes, hit enter. Now go to server like AWS console. Just refresh once. You can see here pending. Yeah, pending one. You can see here. Now it's coming into running a state.
This is Jadu. You can say, we can say Jadu. It's not, it's initializing all those servers. I have given name Pari AWS Terraform. So you can say, see how many servers is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I have given 10 counts. That's why it's in launching 10 servers at a time. Wait few seconds, then it came all a status to 2 by 2 only. Refresh once. It will take like few minutes, but I'm not going to wait here. Just I'm going to destroy all the instance because it will incur the cost for all servers. So I'm going to uh, destroy all the servers. So just type Terraform. Terraform destroy. Enter a value. Type yes. Now go to server. Then you can see again a shutting down. Except one, you can see all are shutting down as of now. After some time, after 1 minute, like within 1 minute, it will show terminated. Wait few seconds. Now you can see here it's terminated, means all instance terminated. So we haven't did anything. So after going through the Terraform, it will save your cost, time as well. So like cost uh, in in cost sense, like if you got the two project at a time and they are demanding like same delivery time, so what will you do? Like if you do manually, so you cannot do anything. You have to you have to increase your existing resource. Like if you are working as a 5 team member, you have to increase 5 to 8 or 10, then you can finish your project as a time, as a like a schedule time. Otherwise you don't have options to do at the same time. So for to reduce all the things, all all the things, we are going through to we are going through the Terraform only. Yeah, that's all for today, guys. Thanks for watching. If you have any doubt, you can ask me, because actually I'm teaching you as like freshers, so that's why I'm facing issue while talking in front of you. So please don't mind. Please help me on this to so sort out. Yeah, thank you guys. Bye.